तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल जमती कि आम आसिक आज पहुँचीचु फिजिक्स मोस्ट क्रुशियल पार्ट एक लॉन्ग क्वेश्चंस बिकॉज एबे जो वीडियो सब आम दबू से वीडियो दैट प्योरली कंट्रीब्यूट टू योर एग्जाम तो आम फिजिक्स में एक्जाक्टली 7 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस गोटे प्रिपरेशन करूँ एंड से 7टा क्वेश्चन भितर तुमको 3टा सारा क्वेश्चन तो निश्चय पाइब एमती एक्चुअली देले तो बहुत किसी दे हम बट दोज आर श्योर शॉर्ट 7 आउट ऑफ 7 तुमको 3 क्वेश्चंस पाइबाटा ऑलमोस्ट कंपलसरी एंड क्लास रे मु करी कौन ना तुमको से 7टा सारा क्वेश्चन रो कॉन्सेप्ट बुझे देवी एंड मोर ओवर तार नोट्स भी तुमको प्रोवाइड कर दिया जीवो विल प्रोवाइडेड एज अ पीडीएफ नोट तो पीडीएफ नोट पाई तुमको कौन करिया को पड़िबो ना गो टू द आंसर पीडीएफ जोटा आज तुम ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं जीवी से लॉन्ग क्वेश्चन टा तुमको पीडीएफ फॉर्मेट रे हैंड रिटन नोट हिसाब रे मिलिबो तो गो एंड डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप ये गोटे तुम अच्छी फ्री बैच जॉइन कले तुम्हें काले सुधा तार पीडीएफ एठी पाइजिब क्लियर तो प्रथम आउ थे रिपीट कर दूची जदि तुम्हें आजिका क्लास रो डिस्कशन रो पीडीएफ चाहूच रिटन फॉर्मेट रे तुमको प्रोवाइड कर दिया जीवो यू हैव टू डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप जॉइन द फ्री बैच एंड सेठी तमे काली सुधा ए आंसर पीडीएफ सब पाइजिबो एंड वन मोर थिंग इफ तुमको आज जहाँ पढ़ा होची और एठी जहाँ प्रोवाइड करा जाउची ये तुमको रियली भल लगुच तुमको बेनिफिशियल लगुच तुम सांग मान संगे भी शेयर कर एंड तुम जूनियर्स मान भी प्रमोट कर कारण आमर ओयूएटी बैच भी आगको लॉन्च हवा जाउची तो इट इज इफ बेनिफिशियल टू ऑल ताले शेयर इट तो बर्तमान नेक्स्ट आम स्टार्ट करबा डायरेक्ट क्वेश्चन रु वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा तुमर अच्छी सेटा होची फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर এই বর্ষ পাই সবুঠু হটশট কোয়েশ্চেন ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার দিস বিলংস টু দ সেমিকন্ডক্টর চ্যাপ্টর কিন্তু সেমিকন্ডক্টর চ্যাপ্টর কু যা পূর্বর এটি খালি পচারিব না সেই ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার বেলে বেলে या সাঙ্গরে গোটে মোস্ট অফ দ টাইম কোয়েশ্চেন সে পচারি দউচি হোয়াট ইজ ডায়োড পচারি দব হোয়াট ইজ ডায়োড তাপরে কহিথিব ব্রিফলি এক্সপ্লেন ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার तो जदि आम डायोड रो क्वेश्चन कहूँ और डायोड विषय कथा हो व्हाट इज डायोड एक्जाक्टली टाई माने टू जेहेतु दीटा इलेक्ट्रोड अच्छी से कह जाउची डायोड तो कौन लिखिबो डायोड रे ना डायोड रो प्रथमे तुम जानिबा दरकार डायोड रो गोटे सिंबल अच्छी सिंबलटा कौन दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड दिस पार्ट इज एनोड दिस पार्ट इज कैथोड दिस इज कॉल्ड डायोड एटा हला तमर डायोड रो सिंबल किंतु प्रैक्टिकली जोठी तमर आमे जो फुल वेव रेक्टिफायर विषय कथा होचे दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डायोड ओनली डायोड रो एप्लीकेशन तो डायोड कौन आमे यदि सिंपली कहिबा ना इट इज ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन and it is doped in such a way that one part behave as a p-type crystal and other part behaves like a n-type crystal. I am making it very clear. What is diode? A diode is a single crystal made up of either germanium or silicon. It's doped in such a way that one half behaves as a p-type semiconductor and other half behaves as a n-type semiconductor. তাহলে আগর কি কিছু লোক कहती p-type semiconductor नहीं आसीबा n-type semiconductor जोड़ी दबा इट इज नॉट फैब्रिकेशन सेटा तार राइट डेफिनेशन नुहे एग्जैक्ट राइट डेफिनेशन कौन आम पाखरे गोटे सिंगल क्रिस्टाल रहिबो दिस इज द सिंगल क्रिस्टाल ओके दिस इज द सिंगल क्रिस्टाल व्हिच इज मेड अप ऑफ either germanium or silicon germanium भी हेई परिबो silicon भी हेई परिबो
बट मोस्ट प्रोबाब्ली आम सिलिकॉन संगे नाउ ए डेज रे काम करूछु ओके इट इज डोप्ड डोप्ड आसिला कोठू डोपिंग आमे याको एमिति हिसाब रे डोपिंग करिबा जेमिति तार 1/2 n टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन हबो अदर हाफ p टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन हबो तो एटा हैला तमरो एक्जेक्टली डायोड दिस इज कॉल्ड योर डायोड और आकु आमे कहूछु अदरवाइज रे pn जंक्शन दिस इज नोन एज आल्सो pn जंक्शन अदरवाइज कहीं कहीं बेले बेले आकु कहउचंती सेमीकंडक्टर डायोड ऑल आर सेम semiconductor diode all are same so now again what is diode is an electronic device which is made up of either germanium or silicon single crystal doped in such a way that one half behaves as a p type semiconductor other half behaves as a n type semiconductor ये हला तमर डायोड रो क्वेश्चन तापरे कोन पचारुची से फुल वेव रेक्टिफायर तो जेतले फुल वेव रेक्टिफायर पचारुची एठी प्रथमे जिंस तमर रहिबो कोन ना प्रिंसिपल व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट कोनोसी गोटे जगार काम करिया पई व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड इट द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज दैट डायोड conducts current only when it is forward biased and does not conduct current when it is reverse biased और जदि single line रे आमे कहिबा we can say it as a unilateral device we can say it as a unilateral device माने it conducts current only in one direction फॉरवर्ड बायस रे करंट कंडक्शन हबो रिवर्स बायस रे करंट कंडक्शन हबो नाही सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड रेक्टिफायर प्रिंसिपल परे आमे जिबा कंस्ट्रक्शन और सर्किट डिटेल हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड किमिति कंस्ट्रक्शन हेची ए कंस्ट्रक्शन पार्ट रे सब बळे मु कहे फिजिक्स रे बेसिक हला डायग्राम you have to draw the circuit diagram first जोटा मु तमर वर्तमान एठी ड्रॉ करूची this is the circuit diagram okay this is the circuit diagram तो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स रे आमे सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करिबा आमे लेखिबा कोन एथिरे now we are supplying the input to the primary of a transformer and taking the output from the secondary part of the semiconductor in which we are connected the load resistance RL और जदि हमें कंस्ट्रक्शन ने देखिबा कोन लेखिबा it consists of two diodes D1 and D2 we are supplying input at the primary side of the transformer we are taking output from load resistance which is connected on the secondary part of the transformer okay so this is the construction details ए डिटेल टा रहिबो
प्रथमे रहिला तमरो व्हाट इज डायोड, देन प्रिंसिपल बिहाइंड डायोड or principle behind your rectifier, and then construction. तापरे जिबा आमे ऑपरेशन को, बट ऑपरेशन को जिबा पूर्वरु हमको जानिबा को पड़िबो तार वेव फॉर्म माने इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म। तो एठी वेव फॉर्म सब बळे तीनटा ड्रॉ करिवो। यू हैव थ्री इनपुट्स, this is input at end A, input at end B, and this is my final output. सर्किट डायग्राम संगे तुम ये तीन टा वेव फॉर्म भी जरूरी। एटा हला मोर इनपुट एट एंड ए, दिस इज इनपुट एट एंड बी, एंड दिस इज माय फाइनल आउटपुट। क्लियरली देख मु लिखी D1 D2 D1 D2 D3 आसबनी कारण मोर ओनली दीटा डायोड अच्छी। तो अल्टरनेटिवली थरे D1 कंडक्ट करिवो, थरे D2 कंडक्ट करिवो। ओके, now I am going to the operation part or working part, how it works. During the positive half cycle, मु प्रथमे end A रू start करची, एटा होची end A, and this is my positive half cycle, this is my negative half cycle. So during the positive half cycle लेखिबो exactly these lines are written in the note और तमे एबे बुझो। During the positive half cycle and A becomes positive and B becomes negative. Clear? During the positive half cycle and A becomes positive and B becomes negative of the secondary transformer side. And A and B kahar secondary part of the transformer. During the positive half cycle of input AC signal, and A of the secondary transformer becomes positive and B becomes negative. This makes diode D1 forward biased and diode D2 reverse biased. So D1 conducts current and D2 does not conduct current. So we are getting current across load resistance RL due to diode D1 only. जोटा मु तुमको डायग्राम रे देखाइछि। During the positive inputs of during the positive half cycle of input, this is positive input, so we are getting diode through only D1. Similarly, during negative half cycle and A becomes negative and B becomes positive, this makes diode D2 forward bias and D1 reverse bias. So diode D2 conducts and D1 does not conduct. So we are getting current across load resistance due to diode D2 only.
So during the positive half cycle, we are getting current diode D1. During the negative half cycle, we are getting current due to D2. So likewise, it is repeated. That means you can clearly see 1 D1 for the positive half, negative pi again D2, then again D1, D2. So alternatively, D1, D2 converts both positive and negative half cycles of input AC to output DC. Since both the positive and negative half cycles are converted from AC to DC, this is called full wave rectifier. And efficiency of full wave rectifier is 81.2%. So again back to आमे review करके देखि देबा exactly केमती लेखा जीवो. Starting habo, what is diode? Diode is a electronic device in which either silicon or germanium single crystal is doped in such a manner that one half behaves as a p-type semiconductor, other half behaves as a n-type semiconductor. It is called diode. Then what is full wave rectifier? Full wave rectifier is an electronic device which converts alternating current to direct current. Next important thing is that what is the principle behind it? The principle behind it is that diode conducts current only when it is forward bias, and it does not conduct current when it is reverse bias. Then we come to the construction part. In construction part, we clearly see that we have two diodes D1 and D2. We are supplying input at the primary side of the transformer. We are taking output from the load resistance RL, which is connected on the secondary side. So these are my construction part. Next, I move on to working part. In working part, during the positive half cycle of input AC, and A becomes positive and B becomes negative. This makes diode D1 forward biased and D2 reverse biased. So D1 conducts current and D2 does not conduct current. So whatever current we are getting in the load resistance, that is due to diode D1 only. Then during the negative half cycle, and B becomes positive and A becomes negative. This makes diode D2 forward biased and D1 reverse biased. So diode D2 conducts and D1 does not conduct current. So we are getting current across load resistance due to diode D1 only. Or आमे एमती कहि परिबा जे आमे alternatively थरे D1 next रे D2, थरे D1 next रे D2, alternatively both positive and negative half cycle of the input is converted into DC. So it is called full wave rectifier and its efficiency is 81.2%. Along with the circuit diagram, you have to draw all the input output waveforms. Se pachari thau ki na pachari thau. Long question अच्छी माने ए डायग्राम को very clearly draw करिवो and maximum पिला भूल कौन करंती ए एक्सिस गुडा रे किछि लेखंतेनी. These are your time axis. एठी टाइम रहिबो. These are your voltages. तो एठी रहिबो तमर एक्चुअली V in, V input. एठी भी V in, V input. एठी रहिबो तमर V out, V output. Clear? Each and every detail should be written in the diagram so that tamara mark reduced na ho. So this is about one most important and easy question as far as consider your book. Tama book bhitre thiba sabuthu eta gote easy question, mostly theory and easily diagram, but gotiye condition diagram रे किछि compromise करिवोनी. diagram जेमति draw करदा proper diagram draw करिवो and diagram संगरे measure हैला output waveform भी दबो, then working लिखिबो तो 2-3 pages भितर एटा हे जिवो.
एंड जेमती तुमको गाइडलाइन दिया है तुम केवल ब्लैक पेन यूज करके काउंसिल लिखिबो नो पेंसिल्स विल बी यूज्ड ड्रॉ कले विल गेट फुल आउट ऑफ 7 मार्क एंड एई जो जिन सब तुमको कहि देली यार पीडीएफ फॉर्मेट तुम डीपी एप्लिकेशन ओडिया ऐप रे दे दिया जीवो तुम डाउनलोड करि परिबो फ्री बैच क्लियर अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर जो तुमको क्लियर अछि ताले आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करके जीवा जो क्वेश्चन टा होची हमर कोन ना बोर्स एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबल लॉन्ग क्वेश्चन जोटा को आमे कहूचु वी कॉल इट बोर्स एटॉमिक मॉडल केयरफुली ये क्वेश्चन टा को बुझिबो कारण बहुत पिला भाबुचंती जे ए क्वेश्चन टा गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन एंड आमे आकु करिबा नाही लंबा बोली भाबुचंती बोर्स एटॉमिक मॉडल रे एठी क्वेश्चन कोन मु तुमको सिंपल कहूची देयर आर ओनली 5 इक्वेशंस प्रथम पांचटा इक्वेशन तुमको मन रखिबार अछि तापरे केवल सब्स्टिट्यूशन सेछि so it is again one of the easiest question and जेहेतु मैथमेटिक्स एथिरे इन्वॉल्व अछि तो मैक्सिमम चांसेस अछि तमे मार्क एथिरे भलो फेच करि परिबो ओके बेले बेले कोन करे जदि से पचारिछि एठी बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट जदि बोर्स रा पोस्टुलेट पचारिछि ताले तमे पोस्टुलेट लिखिबो जदि पोस्टुलेट पचारि नाही तमे डायरेक्ट डेरिवेशन को जाई परिबो यदि कहिला राइट डाउन बोर्स पोस्टुलेट एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन nth ऑर्बिट तो बहुत पिला भाबंती कोन ना खाली तो एनर्जी पचारची आमे पोस्टुलेट चारटा लिखि देले एंड एनर्जी डायरेक्ट डिराइव कर दबा सेमिति डायरेक्ट डेरिवेशन हेई परिबो नाही एनर्जी पूर्वरु तुमको रेडियस बाहर करिया को पड़िबो वेलोसिटी बाहर करिया को पड़िबो रेडियस वेलोसिटी बाहर कर सारला परे काइनेटिक एनर्जी देन पोटेंशियल एनर्जी देन टोटल सम अप बाहरिबो हमर फाइनल एनर्जी so this is the procedure लंबा नुहे इट इज इजियर वन टिके पेशेंस देखि जदि सुनिबो सीक्वेंस को बुझिबो तम पई किछि डिफिकल्ट नाही पोस्टुलेट को ऑलरेडी तुमको दे दिया है नोट्स और तुम बुक रू रेफर करि परिबो मु डायरेक्ट डेरिवेशन पार्ट रू जाउची जो पार्ट रे मैक्सिमम पिलांकर डाउट अछि अगेन मु कहले सब बेले यू स्टार्ट विथ अ डायग्राम ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट जदि तुम डायग्राम क्लियरली ड्रॉ करूछो तुमको लॉन्ग क्वेश्चन रे किछि इश्यूज हबो नाही ओके so now I am drawing the diagram as you can see so this is the only diagram रे अछि कोन न्यूक्लियस प्लस जेडी रो चार्ज this is the electron of mass m moving with a velocity v situated at a distance r from the center ए को बेस करके आमे बाहर करिबा तो एथिरे प्रथम इक्वेशन मु कहि सब बेले प्रथम पांचटा इक्वेशन बहुत इंपोर्टेंट एथिरे फर्स्ट इक्वेशन कोन आसीबो जेहेतु एटा सर्कुलर पाथ रे बुलुची सर्कुलर पाथ रे बुलुची आमे प्रथमे पढितिले फर्स्ट ईयर रे जे एनीथिंग व्हिच मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ always experience a force
we call it as centripetal force. तो प्रथम एक्सप्रेशन जोटा तमर बाहरिबो सेटा होची तमर कोन ना सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स रो एक्सप्रेशन हला FC is equal to mv square by r. This is equation 1. प्रथम पांचटा इक्वेशन जो तमे बुझी गलो एथिरे कोनोसी डिफिकल्टी नाही. Since the electron moves around the nucleus in a circular path, it experiences a centripetal force which is given by the formula Fc is equal to mv square by r. Next, since these are charged bodies, because this is plus JD, this is minus electron, तो charged body रही बोली एठी Coulomb's force भी आसीबो और आमे कहूचु force of electrostatic attraction दीटा charge body भितरे सबु बळे force of electrostatic attraction रहिबो. The next equation is Coulomb's law using law of attraction, or we can write it as Fe, force of attraction of Coulomb's law, that is given by 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 pi r square. This is Coulomb's law. एठी हमर कोन अछि ना we have here q1 जगरे अछि मोर ze and q2 जगरे अछि मोर e. यदि मु से दिटा को सब्स्टिट्यूट करिबी तो my Fe becomes 1 by 4 pi epsilon 0 ze into e divided by r square, or we can say that Ve or Fe is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r square. This is my equation 2. So one is your centripetal force or expression, Fc is equal to mv square by r. Another one is the Coulomb's law, electrostatic force of attraction given by 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. But in this case, we have q1 is equal to jd, q2 is equal to e. If I substitute them in the equation, I get a value that Fe is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r square. Clear? Now we'll move to the next basic question. जोटा होची तमर equation 3. Equation 3 कौन कहूची? If centripetal force and electrostatic force of attraction जदि काउंटर बैलेंस करिवे दीटा सारा इक्वेट हबो ताहले जाई कि मोर एटा सर्कुलर पाथ रे कंटिन्यू मूव करिवो. बेसी कम हेले ए प्रोसेसटा कंटिन्यू करि परिबा नाही. So we can write that from equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, we get that mv square by r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r square. और यदि मु आकु r संगरे कैंसल आउट करिबी, it will be mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square divided by r. This is my equation 3. This is equation 3. Next, आमे आउ गोटे जिंस जानिचे बोर्स पोस्टुलेट रे that angular momentum is multiple of nh by 2 pi. We can say that angular momentum L is equal to mvr, that is equal to nh by 2 pi. This is my equation 4. So these are the basic equation.
जदि तुम ये चारिटा इक्वेशन को क्लियरली बुझी जाइच तुमको आउ कौन सी असुविधा हम नाही। फर्स्ट वन, जेहेतु सर्कुलर पाथ रे बुलुची सेंट्रीपेटल फोर्स रो एक्सप्रेशन Fc is equal to mv square by r, then जेहेतु देयर चार्ज बॉडीज एतिपई एक्सप्रेशन करिवे कूलम्स लॉ ताको पाइबा 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r square, and in order to move the electron in a continuous circular path the electrostatic force should be counterbalanced by the centripetal force. So from equation 1 and 2 we get this, and after simplification we get expression that mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r. Or we can say that from the again another postulate जोटा 4 number, angular momentum which is represented by L, mvr is equal to nh by 2 pi. This is called equation 4. वर्तमान पाखरु ये जो इक्वेशन 4 पर्यंत तमे बुझी आसिल तमे एक्जाक्टली या परे केवल सब्स्टिट्यूशन हबो, there will be only substitutions. Okay, so look at carefully. एठू बाहरिबो हमर प्रथम पैरामीटर which is we called as orbital velocity. प्रथमे बाहरिबो तमर एथिरे orbital velocity. ऑर्बिटल वेलोसिटी आमे एथिरे बाहर करिबा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बाहर करिबा पई प्रोसेस कोन ना, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4. यू राइट इट, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4. तो मोर इक्वेशन 3 कोन थिला ना, इक्वेशन 3 थिला मोर mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r. This is my equation 3, and equation 4 रे divide करिबी. equation 4 रे मोर divide कले मोर equation 4 थिला mvr is equal to nh by 2 pi. ताकू यदि मु उल्टे की गुणी देबी एटा हे जिवो 2 pi by nh, 2 pi by nh. और वर्तमान जदि आमे एथिरे कैंसल आउट करिबा, इफ आई कैंसल आउट, डोंट कैंसल इन कॉपी रे एमती कैंसल करिवनी, मु तुमको बुझे पई काटुची. जदि तमे कैंसल आउट करिवार अछि ए एक्सप्रेशन को आउ थरे तळे लेखि की कैंसल आउट करिवो. ओके, डोंट लाइक दैट, कॉपी रे एमती काटिबो नाही. तो कैंसल आउट कर देला हमें कोन पाइले ना, v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by nh, because r भी तमर एठी कैंसल हबो. तो v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square nh, and एठी गोटे 2 pi तमर अछि. Here we have a 2 pi. एतिके कथा सरी गलानी. आ परे कोन करिवो, जेतबेले जो पैरामीटर बाहर करिवो ताकू देखैबो तार रिलेशन z संगरे, एटॉमिक नंबर संगरे कोन अछि, तार रिलेशन n संगरे माने ऑर्बिट संगरे कोन अछि. तो आमे जदि एठी मार्क करिबा आमे देखिबा कोन ना, हमरो v is directly proportional to z. ए जिंसटा लेखिबो v is directly proportional to z, माने एटॉमिक नंबर जदि हाई रहिबो ताले तार वेलोसिटी भी ऑर्बिटल रे हाई रहिबो. दिस इज v proportional to z. नेक्स्ट आउ गोटे कंडीशन मु कोन पाउची ना, मोर v proportional to 1 by n, v proportional to 1 by n. ता माने कोन, जदि मोर ऑर्बिटल हाई वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी जीवो तमर से अनुसार वेलोसिटी कोन हबो, कमिबो. जदि ऑर्बिट कमिबो वेलोसिटी बढ़िबो. और आमे एठी एम्ति कहि परिबा जे आउटर इलेक्ट्रॉन हैव हायर स्पीड देन योर इनर ऑर्बिट. कारण इनर ऑर्बिट रो वैल्यू सान तमर आउटर ऑर्बिट हेले वेलोसिटी मन रखिबो जे आउटर ऑर्बिट रो वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर इनर ऑर्बिट. कारण इनर ऑर्बिट गुडा टाइटली बाउंड हेकी तांती. तो सब बेले बाहर करिबो z संगे रिलेशन कोन, n संगे रिलेशन कोन. वर्तमान आमे जिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर पई
जोटा होचे आमे बाहर करिबा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वेलोसिटी पर आमे बाहर करिबा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वी गो फॉर रेडियस आमे रेडियस पई बाहर करिबा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रेडियस पई आमे कोन करिबा इक्वेशन 4 रु आमे बाहर करिबा वैल्यू ऑफ v तो v इज इक्वल टू nh by 2 pi mr nh by 2 pi mr एटा आसिला कोठू ना फ्रॉम इक्वेशन 4 यदि क्लियरली आमे बैक करके देखिबा इक्वेशन 4 mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi मु v बाहर करछि तो v बाहर कले तमर mr टा ऊपर अछि तळे जे के आर पटे डिवाइड हे जिवो सो फ्रॉम दैट आई गेट दैट v is equal to nh by 2 pi mr. Now substituting the value of v in equation 3 मोर equation 3 रे expression थिला कोन ना m into v रो स्क्वायर तो v रो स्क्वायर माने ई वैल्यू रो स्क्वायर केते हबो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r z square by r मु केवल सब्स्टिट्यूट करछि इक्वेशन 3 रे सब्स्टिट्यूटिंग v in equation 3 रे मु वैल्यू v रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करछि सब्स्टिट्यूट करके कैंसल आउट कला परे ए एक्सप्रेशन रो मु बाहर करिवे r कोन व्हाट इज r now I will find as r is equal to 4 pi epsilon 0 n square h square divided by 4 pi square me square. Okay, you mark it as equation 6. You mark it as equation 6. Now again out के simplify कर दबा r is equal to e0 by pi into n square h square divided by mz square divided by mz square. Okay, it is z ता शायद मिस हो जाइछि I have missed z so mz square so this is expression for r mark it as equation number 7 so again same काम करिबा r टा केमिति प्रोपोर्शनल n संगरे and r टा केमिति प्रोपोर्शनल z संगरे तो क्लियरली देखो r proportional to n square ता माने यदि मोर फर्स्ट रेडियस टा 1 हुए सेकंड रेडियस टा 4 हबो थर्ड रेडियस टा 9 हबो ता माने स्पेस ऑफ द आउटर रेडियाई इज मोर देन दैट ऑफ द इनर रेडी ता माने आमे जदि गोटे ऑर्बिट रो एम्ति इनर रु बाहर को जीवा मोर आउटर रो स्पेस टा बढ़ी का जीवो आउटर रेडियाई को भीतर स्पेस अधिका हबो दैट सिग्निफाइज r proportional to n square. Clear? Next, z संगरे केमिति related ना r is inversely proportional to 1 by z ता माने heavier element मानकर रेडियस टा होची छोटा लाइटर एलिमेंट मानकर रेडियस होची बड़ because radius संगरे तमरे एटा inversely related so this is all about your radius. Now we will move on to the most important part जोटा को हमको कहा जाइतला एनर्जी डेरिवेशन करिवा को ऑफ nth ऑर्बिट तो एनर्जी डेरिवेशन करिया को गले मोर एठी दी प्रकार एनर्जी अछि गोटे होची काइनेटिक एनर्जी आ गोटे होची पोटेंशियल एनर्जी तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी
ना kinetic energy is the energy which is possessed by the moving electron. इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट पई जो इलेक्ट्रो एनर्जी प्रोड्यूस होची सेटा होची तमर काइनेटिक एनर्जी एंड वी नो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हमको ऑलरेडी mv स्क्वायर रो वैल्यू हमें इक्वेशन 3 रे पूर्वरु बाहर करि सरिचे यदि बैक को हमें देखिबा what is mv square I have the calculated value here mv square मु ए जगह रे ऑलरेडी कैलकुलेट करिकि रखिछि तो मु केवल ताकू नै कि सेठी सब्स्टिट्यूट कर देबी एंड आई विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू half value of mv square is 1 by 4 pi epsilon 0 jd square by r. This is the expression for kinetic energy. I mark it as equation number 8. Kinetic energy पर next most important energy is your potential energy. Now we will go for potential energy and formula for potential energy is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r. And previously I have already told that q1 is equal to jd and q2 is equal to minus e. So we get potential energy as 1 by 4 pi epsilon 0 ze minus e divided by r, or we get pe is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 जेडी स्क्वायर बाय आर एठी माइनस टा रहिबो एठी किछि पिलांकर क्वेश्चन शायद आसी पारे सर आपण जेतबळे प्रथमे सेठी mv स्क्वायर पाखरे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पाखरे नैथिले ई रो वैल्यू को माइनस ई नै नाहंती तो एनर्जी जागरे काहे की माइनस नेले बिकॉज़ जेतबळे आमे सेठी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर करथुलु सेठी मु केवल मैग्नीट्यूड को कंसीडर करिथिली तो नेगेटिव रे कोन हबो ना नेगेटिव एनर्जी रे जेहेतु प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छी तो ए जगह रे मते साइन टा कंसीडर करे को पड़िबो काहे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़िले पोटेंशियल एनर्जी कमिबो पोटेंशियल एनर्जी बढ़िले काइनेटिक एनर्जी कमिबो बिकॉज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इट इज मियरली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर सेति पई से जगह रे मते केवल मैग्नीट्यूड दरकार थिला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे मते कोनोसी डायरेक्शन किबा कोनोसी साइन दरकार नथिला बट जेतले एनर्जी रो कैलकुलेशन करूछु कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल होल्ड करिया पई मु माइनस ई को नेछि तो आई गेट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बर्तमान पोटेंशियल एनर्जी भी पाई गली मु दिस इज माय इक्वेशन 9 मते वर्तमान बाहर करिवार अछि टोटल एनर्जी नाउ आई हैव टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी बाहर करिया पई फार्मूला सिंपल यू ऐड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जहाँ अच्छी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दुईटा को तमे ऐड कर दो इफ यू ऐड इट यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू दैट इज टोटल एनर्जी सो जदि हमें ऐड करिबा वी गेट इट एज 1 by 2 into 1 by 4 pi epsilon 0 ze square by r minus 1 by 4 pi epsilon 0 ze square by r तो मु एथुरु कॉमन कोन नै परिबे रे ना 1 by 4 pi epsilon 0 जेडी स्क्वायर बाय आर को मु कॉमन नहीं गले मोर रहिला हाफ माइनस 1 तो इट विल अगेन बिकम जदि मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिखिबी माइनस 1 by 2 1 by 4 pi epsilon 0 जेडी स्क्वायर बाय आर so this is my final equation total energy मोर एतिकी बाहरुची जदि मु आकु फर्दर सिंप्लीफाई करिबी और ऐड ऑन करके लिखिबी एटा केमती लेखा जीवो एनर्जी टाकू हमें नौछु W टोटल एनर्जी W इज इक्वल टू
minus 1 by 2 1 by 4 epsilon 0 z square by E0 by pi into n square h square whole divided by mz square. এই ইকুয়েশনটা কোঠু আসিলা বলি তম মନରେ ডাউট আসিপারে. দিস কমস ফ্রম ইকুয়েশন 6. এটি r র ভ্যালু মু ইকুয়েশন 6 রু পুট অপ করিছি ডাইরেক্ট. ইফ ইউ ক্যান সি ইট ক্লিয়ারলি, ইকুয়েশন 6 রে যে মু ভ্যালু বাহার করিছি, ইকুয়েশন 6 রে মু পুট করিছি r র ভ্যালু. r র ভ্যালুটাকে মু এইটু সবস্টিट्यूट করছি ফ্রম ইকুয়েশন 6. মু r র ভ্যালু পুট অপ করিছি 1 by 4 pi epsilon 0. r র ভ্যালুটা মু এই ইকুয়েশন 6 রু নেকি সে জায়গায় পুট অপ করছি. ওকে, তো পুট অপ কলা পরে মোর ফাইনাল এক্সপ্রেশন কোন বাহারিব যদি ইয়াকু সলভ করদবা. w is equal to minus 1 by 8 epsilon 0 square into z square me4 divided by n square h square. So this is my equation 10. Eta hela moro final expression for energy of the nth orbit. But again mu kahichi sabu bale bahar karibo what is the relation between z and n. n sangre kon achi, z sangre kon achi. तो आमे जदि देखिबा w is proportional to minus z square. w टा तमर एटॉमिक नंबर स्क्वायर संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ता माने कौन? nth orbit of the heavier element is less energetic than the lighter element. तो जेते एलिमेंट टा हेवी हबो तारो एनर्जी टा सेते कम हबो. काहे कि ना एठी नेगेटिव साइन टा अछि. लाइटर एलिमेंट रो एनर्जी हेवियर एलिमेंट रो एनर्जी अपेक्षा बेटर हबो. तापर देखिबा n संगे केमती प्रोपोर्शनल ना w प्रोपोर्शनल टू minus 1 by n square. तो यार मीनिंग कौन? इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर एनर्जेटिक देन द इनर मोस्ट ऑर्बिट. तो दिस इज द प्रोसीजर, टोटल प्रोसीजर. जदि टिके याकू ओवरव्यू करिबा बैक रु आमे प्रोसेस केमती स्टार्ट करथिले देखि दवा टिके. ना आमे स्टार्ट करथिलु बोर्स एटॉमिक मॉडल रु. जदि तुमको पोस्टुलेट पचारिची यू मे राइट द पोस्टुलेट, जदि पचारि नाही यू मे नॉट राइट. आमे स्टार्ट करिबा जेहेतु एटा गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करूची सेति पई मोर सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर हबो जार एक्सप्रेशन हैला Fc is equal to mv square by r. Again these are charged bodies, so I go with Coulomb's law of attraction and putting the value I am getting Fe is equal to this one. In order to keep moving the electron in the circular path, the centripetal force and the force of attraction must balance each other. So from equation 1 and 2, I am getting mv square is equal to this one. And another postulate, L equal to mvr is equal to nh by 2 pi. From that, I am giving the equation 4. Now, in order to get the orbital velocity, simply I have to divide equation 3 by equation 4. Then I have to derive relation between v and z and v and n. Next, I move on to radius. From radius, I am just taking the value from equation v, substituting it and calculate the value of r. And next is easy. Find the kinetic energy. I have find the value of mv square already in the previous equation, substituted this one. Then find the equation for potential energy. Finally sum up and we are getting the output. And आउ गोटे जिनस ये तुमको कहबी ये भाया क्वेश्चन ने तुमर जदि किसी असुविधा रहुची यू जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट. गोटे फ्लो चार्ट करके प्रैक्टिस करिबो. फ्लो चार्ट माने कौन? प्रथम स्टेप एक्सप्रेशन फॉर centripetal force. This is step 1. Next, expression for electrostatic force of attraction. Next, equation 3, equate
equation 1 and 2. Then step 4, MVR is equal to NH by 2 pi. Then step 5, find velocity. Find velocity. Velocity find kariya pai, what I have to do? Now divide equation 3 by equation 4. Then 6, find out radius. रेडियस बाहर करबा पई मु इक्वेशन 4 रु कोन करिवि r रो वैल्यू को नेबी देखि सब्स्टिट्यूट करिवि रेडियस बाहर करे सरला परे नेक्स्ट बाहर करिवि मु काइनेटिक एनर्जी इट इज स्टेप नंबर 7 देन स्टेप नंबर 8 पोटेंशियल एनर्जी स्टेप नंबर 9 टोटल एनर्जी एंड ईच स्टेप रे सब बेले देखिबो व्हाट इज द रिलेशन विथ n and what is the relation with z. Each and every parameter cover करिबे. You just make a flow chart. माइंड मैप करो कि फ्लो चार्ट करो जदि मने रहू नाही एई जिंसटा को टिके लिखिले साइड रे एक्सप्रेशन गुडा को भी लिखि देले तमरो प्रैक्टिस हे जिवो एठी एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एठी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वेट कर देले एठी बाहरिबो तमरो mv स्क्वायर रो वैल्यू देन ताको सब्स्टिट्यूट कर देबो गोटी पेज रे गोटे चार्ट रहि गला तमे माइंड रे केबे भूलिबो नाही एंड एज यू नो डायग्राम इज वेरी सिंपल कोन अछि डायग्राम रे गोटे सर्कल अच्छी न्यूक्लियस अच्छी ता चारिपटे डॉटेड लाइन अच्छी एठी इलेक्ट्रॉन टे अच्छी मूव करछि वेलोसिटी v रे मास होछि m चार्ज होछि -c यार चार्ज होछि डिस्टेंस होछि r दिस इज द डायग्राम गोटी पेज रे सब तक हबो यू प्रैक्टिस इट इन अ प्रॉपर वे रे प्रैक्टिस कर सब हेई परिबो किछि असुविधा नाही इट इज अ साइंस साइंस मीन इट हैज अ मेथड मीन्स इट इज लॉजिकल मीन इट इज सीक्वेंस. Whenever you organize your knowledge in a particular sequence, that becomes science, and science is never difficult. You can clearly see it. Okay, I think this part is clear. Now we will move to the next question. That is most important. Again, short question. That is Biot-Savart law. Okay, from electromagnetics. That is Biot-Savart law. Very important question. So that comes to Biot-Savart law. This is Biot-Savart's law. Biot-Savart law. Okay, we'll move on to Biot-Savart law next. Prior to that, just give me a minute. Okay, few people are querying about the numericals and other questions. So today, आज राति 8टा बेलू तुम मैंने वेट कर डीपी सर तुमको प्रोवाइड करेंगे डिटेल्स एंड न्यूमेरिकल्स तुमर जी अच्छी ऑलरेडी 10 इयर्स रो PYQ सीरीज भितर यू जस्ट गो थ्रू देम जो माने PYQ सीरीज रे क्लासेस करिथिला PYQ सीरीज रे तुमर जो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर दिया है फार्मूला बेस्ड you go through that one you will get most of them. Okay, again मु गोटे जिंस कहबी जदि तुमको आजिका क्लास रे वैल्यू एडेड होला बडा लागुची जे तमरो दुईटा क्वेश्चन मु करैची एंड दुईटा सारा क्वेश्चन तमे क्लियर अछ तुमको भलो लागुची यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रमोट टू योर जूनियर्स जो माने अछंती कारण आगु को हमें OU8 बैच भी लॉन्च करिवु एंड ऑल थिंग्स विल बी गो इन अ सेम मैनर. ओके, तो बायोट-सावर्ट लॉ को जीवा. बायोट-सावर्ट लॉ रे कोन कहूची रे जदि तुम एटा को बुझी सारिच ए क्वेश्चन काइंडली फीडबैक दियो कनेक्ट करो एंड अन्य मान को प्रमोट करो बिकॉज तुमरो प्रमोशन कालिका दिन रे आउ कहा को गोटे बेटर मार्क सिक्योर करिबारे हेल्प करिवो एंड डेफिनेटली वी विल बी ग्रेटफुल टू यू. ओके, so next we'll move on to Biot-Savart law, but before moving to Biot-Savart law let me check the feedback रे टिके कंप्लाई करो that how you like it केते लाइक करूचो केते पंतो तमर एटा क्लियर हेची जो दुटा क्वेश्चन मु कर दे गली बिकॉज़ से दुटा क्वेश्चन होची मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन. सो आई नीड योर फीडबैक फॉर मोर प्रोग्रेस एंड बेटर आउटपुट्स. आज तीनटा क्वेश्चन करा जाउची एटा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट रे पुनी आउ चारटा क्वेश्चन करा जिवो सेही लॉन्ग क्वेश्चन एठी डेरिवेशन रे बुझाई दिया जिवो एंड वी विल गेट द PDF.
Okay. Thank you for your positive feedbacks and movements. Now we'll go to Biot-Savart law. The Biot-Savart law ta exactly gote question e ବର୍ଷ ପାଇଁ sure shot ଏଇଥି ପାଇଁ କହେ Biot-Savart law belongs to the chapter we call it as magnetic effect of current. Magnetic effect of current ro gote part. तो Biot-Savart law कहुची कोन तार स्टेटमेंट कोन कहुची ना से स्टेटमेंट दउची relation between magnetic field and current element. गोटे current element आउ magnetic field भितर relation हमें जानिचु इलेक्ट्रिक फील्ड रे मैग्नेट रखले मैग्नेट इन्फ्लुएंस हबो मैग्नेटिक फील्ड रे चार्ज रखले चार्ज भी इन्फ्लुएंस हबो बट हमको एठी रिलेशन बाहर करिवार अछि करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड संगरे करंट एलिमेंट रो कोन रिलेशन तो यू बेटर जेमति तुमको पीडीएफ दिया जीवो सेही हिसाब रे डायग्राम करिवो बट वर्तमान बुझिया पई चेष्टा करो सपोज करो ओके x this is y तो Biot-Savart law रे हमें रिलेशन देखिबा मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट भितरे हियर आई हैव ए करंट एलिमेंट एटा गोटे करंट एलिमेंट रो गोटे छोटा सेगमेंट मु नेची व्हिच इज dl आई एम ऑब्जर्विंग एट ए पॉइंट p गोटे पॉइंट p रु रही कि मु करंट एलिमेंट को ऑब्जर्व करूची जहार डिस्टेंस होची r whose distance is r. So I am observing dl from a distance r at a point p. That magnetic field intensity होची तमरो db. Distance is r. An angle between current element and the observing point is theta. तो Biot-Savart law कौन कहूची ना number 1 db magnetic field is directly proportional to I. Magnetic field तमरा current संगरे directly proportional. आउ कौन कहूची ना second जिंस कहूची db is proportional to dl. Magnetic field current element संगरे भी directly proportional. Then number 3 कहूची कौन ना db proportional to sin theta means sin of the angle between current element and the magnetic element I am taking observation. Then number 4 कहूची db is inversely proportional to distance of the square between current element and magnetic element. So this is Biot-Savart law. According to Biot-Savart law, magnetic field is directly proportional to I, current flowing through it. It is directly proportional to length of the conductor dl. It is directly proportional to sine of the angle between your current element and magnetic element. And it is inversely proportional to the square of the distance between your current element and the point from where observing. जदि याको हमें कंबाइन कर दबा all these four
What is Biot-Savart law? dB is equal to IDL sin theta, IDL sin theta divided by R square, or sorry proportional to जदि मु constant गुणिबी गोटे k गुणिबी dB is equal to k into IDL sin theta divided by R square, and value of k रो value होची mu 0 by 4 pi, mu 0 by 4 pi or 10 to the power minus 7 Tesla meter ampere inverse. So this is Biot-Savart law. एटा होची तमरा Biot-Savart law. तो Biot-Savart law रे हम एक्सप्रेशन फाइनली कौन पाइलु ना dB is equal to IDL sin theta divided by R square, and ता पूर्वरु कांस्टेंट गुणा जीवो mu 0 by 4 pi, और आउ थरे मु लिखि देले क्लियरली dB is equal to mu 0 by 4 pi IDL sin theta divided by R square. This is Biot-Savart law. एटा होची Biot-Savart law. एतिकी एक्सप्लेन करिबो या संगरे से पचारिबो एप्लीकेशन. दीटा एप्लीकेशन थिला हमरो, गोटे होची स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, आ गोटे होची हमरो करंट कॉइल, सर्कुलर करंट कॉइल. तो हमरो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर नाही, आमे मोस्टली फोकस करूचु सर्कुलर कॉइल रे जोटा अछि डायग्राम. तो अगेन मु कहबी सब बडे डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट. तो आमे डायग्राम को ड्रॉ करिबा, देन डायग्राम रो डेरिवेशन पाखकु जीबा. So now look at the diagram. So this is the circular coil. I am looking for it. And from the axis I am taking, this is the point P where I am making observations. Okay. Since it is the current element, each small portion taku monochi current element DL, almost straight line. The distance is your S R. These angles making phi. This is also phi. तो गोटे मैग्नेटिक फील्ड हमर जीवो एपोर्ट को, आ गोटे आसीबो एपोर्ट को. ओके, तो एई जो मैग्नेटिक फील्ड हमर बाहर छि, दिस एंगल इज आल्सो phi, दिस एंगल इज आल्सो phi. ए दुटा होची तमर एक्जेक्टली dB. ओके, तो dB को हमें रिजॉल्व करिबा गोटे हॉरिजॉन्टली गोटे वर्टिकली. हमें सब बळे जानिचु कोनोसी भी वेक्टर को हमें रिजॉल्व करिबा गोटे वर्टिकली गोटे हॉरिजॉन्टली. तो जदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मु नेबी, दिस इज कॉल्ड dB cos theta. dB cos theta गोटे एलिमेंट रो डायरेक्शन. एपटे आ गोटे आसीबो हॉरिजॉन्टली dB cos theta. बट जेतले वर्टिकली मु नउची थीटा सारा करंट एलिमेंट सबु रहिबे dB sin theta. This is dB sin theta. This is also dB sin theta. माने मो कहबार माने हला, this is a current coil. यार रेडियस होची a,
Okay, center is C, current flowing through is I, and I am taking the point এই জায়গায় কোন করা হয়েছে এইটা এই কারেন্ট এলিমেন্ট রু গোটে আমি জিনিস নেকি বাহার করছে এপট কারেন্ট এলিমেন্ট রু বাহার করছে সো দিজ আর মাই টু কেসেস অর নেট রেজল্টান্ট কিন্তু আমি যেতবে দুইটা ডিরেকশন পাউছু ভেক্টর রে আমি জানিছু যেতবে আমি এমতি দুইটা অলগা অলগা কেস পাউ আমি তাকু ভার্টিকালি আর হরাইজন্টালি কম্পোনেন্ট রে রিজলভ কरू তো সেইপাই আকু মু রিজলভ করেছি ডিবি cos থিটা ডিবি sin থিটা ফর দিস কম্পোনেন্ট ডিবি cos থিটা horizontal and dB sin theta. As you can clearly see from the diagram that dB cos theta and this dB cos theta are in opposite direction. माने they are cancelling each other. किंतु जो component आमर vertical अच्छी dB sin theta they are in the same direction. That means they are added up. dB cos theta cancel हो जाउचंती but dB sin theta जोटा मोर vertical component they are being added up. So according to amor Biot-Savart law आमे जानिचु कोन exactly ना distance कोन कहूची मो फार्मूला ए फार्मूला को दिन पकेबी dB is equal to mu 0 by 4 pi IDL sin theta divided by s square because a distance ta mu a triangle ta neichi this is my s square this is s so distance ta r square jaga re mu neichi s square किंतु आमे जानिचु कोन ना dl आउ थीटा होची परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए जो dl अछि dl एंड s ए एंगल टा होची मोर 90 डिग्री तो मोर sin 90 रो वैल्यू होची केते 1 जेहेतु dl perpendicular to s so this expression becomes dB is equal to mu 0 by 4 pi into IDL by s square. This is my expression. एटा मोर expression change हे गला कारण थीटा रो वैल्यू मोर 90 डिग्री तो जेहेतु मते बी कैलकुलेट करिवार अछि मोर वर्टिकल कंपोनेंट माने एडेड अप होचंती तो मु इंटीग्रेशन करिवि केवल वर्टिकल कंपोनेंट रो दैट इज dB sin phi यार इंटीग्रेशन करिवि तो मु जानिछि sin phi रो वैल्यू जदि मु बाहर करिवि प्रीवियस डायग्राम रो a by s एटा होछि s एटा s एटा a यदि एई जगह रु मु sin थीटा बाहर करिवि p by h ओके तो p by h बाहर कले it will become sin phi is equal to a by s sin phi is equal to a by s and मु dB रो वैल्यू केते जानिछि रे ना mu 0 by 4 pi into IDL s square तो केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट हबो अरे कोन हबो मोर b ना b is equal to integration of mu 0 by 4 pi IDL by s square and sin phi रो वैल्यू होची a by s मु सबुतक वैल्यू 1 by 1 एठी सब्स्टिट्यूट कर देछि तो सब्स्टिट्यूट कर देले मोर कोन हबो फाइनल b रो वैल्यू जेहेतु मोर खबु गुडा कांस्टेंट टर्म मु बाहर को नै आसीबी mu 0 इज ए कांस्टेंट mu 0 बाहर को आसीबो 4 pi इज ए कांस्टेंट 4 pi बाहर को आसीबो i जोटा करंट एलिमेंट सेटा भी कांस्टेंट मोर रेडियस भी कांस्टेंट एंड डिस्टेंस s q जो नै जे से भी कांस्टेंट मु केवल इंटीग्रेशन बाहर करिवि कहार dl रो मु केवल इंटीग्रेशन बाहर करिवि dl रो एंड dl रो इंटीग्रेशन को जदि मु देखिबी इट इज नथिंग बट हम जे देखिबा dl रो इंटीग्रेशन को dl इंटीग्रेशन एटा जदि रेडियस मोर i हुए r रो पैरामीटर और पेरीमीटर इज 2 pi a
आर इनपुट हम मोर 2 पाए ए तो 2 पाए ए तो dl जगह मोर बसिबो 2 पाए ए जदि मु 2 पाए ए बसैली मु b रो वैल्यू पाइबी b इज इक्वल टू म्यू 0 i a 4 पाए s q इंटू 2 पाए ए तो 2 पाए ए बसैले मु फाइनल एक्सप्रेशन कौन पाइली ना b इज इक्वल टू म्यू 0 i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2sq मोर पाए पाए कैंसल हो गला p इज इक्वल टू म्यू 0 i a स्क्वायर बाय 2sq ओके तो s इज इक्वल टू कौन हम रे यदि मु देखबी एठी ए जगह रु s अच्छी एठी एठी s अच्छी एटा को r अच्छी तो हमें यदि राइट एंगल ट्रायंगल रे ए जिनसटा बाहर करबा तार हाइपोटेनस टा बाहर करबा तो हाइपोटेनस बाहर कले तार फार्मूला कौन हबो ना s will be represented as r square plus a square रो रूट ओवर s जगह रे पड़िबो r square plus a square रो रूट ओवर यदि मु ताको सब्स्टिट्यूट कर देली और आमे याकू लिखि परिबा r square plus a square whole to the power 1 by 2 ऑलरेडी क्यूब टा मल्टीप्लाई हेकी अछि तो मो b होबो b is equal to म्यू 0 i a square divided by r square plus a square रो 3 by 2 this is my answer ओके यदि सेंटर ऑफ द लूप रे कहला बाहर करिया पई से कहबो सेंटर ऑफ द लूप रे r टा 0 हे जिवो बिकॉज़ मोर सेंटर रे रेडियस होची 0 यदि सेंटर रे मोर रेडियस टा 0 हे जिवो ताले मोर एक्सप्रेशन कोन हबो ना दैट इक्वेशन बिकम्स b is equal to mu 0 ni by 2a n is what number of turns in the coil n is the number of turns of coil so that is all about your Biot-Savart law टा केवल एक्सप्लेन करिवार अछि एक्सप्लेन करि सरला परे एठी क्रिटिकल जिंसो सेमति किछि नाही एठी मेजर होची डायग्राम रो एक्सप्लेनेशन ओके तो क्लियरली आमे देखिलु Biot-Savart लॉ को टिके रिव्यू कर दबा बैक रे Biot-Savart लॉ कोन कहूची ना Biot-Savart लॉ कहूची db गोटे करंट एलिमेंट अछि करंट एलिमेंट रो पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट p रे जदी आमे ऑब्जर्व करिबा व्हाट विल हैपन db is directly proportional to I, db is directly proportional to dl and db proportional to sin theta, db proportional to 1 by r square. चारटा को कंबाइन कर देला db proportional to ideal sin theta by r square. k रो वैल्यू होची mu 0 by 4 pi and rest of the thing डायग्राम रे हमें केवल सब्स्टिट्यूट करबा एई जगह रे खाली गोटे जिंस ध्यान रखिबार अछि जे ए करंट एलिमेंट जतले हम वर्टिकली नौचू आमे कोन करूचू आकु रिजॉल्व कोलू गोटे हॉरिजॉन्टली db cos थीटा आ गोटे भी हॉरिजॉन्टली db cos थीटा गोटे sin थीटा आमे देखिलु कोन ना मोर जोटा वर्टिकल कंपोनेंट सेटा एडेड अप होउची बट जोटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैंसिल होउची तो सेति पई मु नेक्स्ट नेली इंटीग्रेशन नेकी बाहर कला परे आई एम गेटिंग फाइनली आउटपुट एज दिस वन so this is one of the easiest one and तुम माने को जते प्रैक्टिस करिवो तमर आउटपुट सेते बेटर रहिबो प्रैक्टिस बिना हबो नहीं you have to write it and practice it okay so I hope you are clear with your proper feedback it help me again कहिबी जई तुम मान करे जिंस रे क्लैरिटी बढ़ुची तमर पाठ पढ़ा रे कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऐड होची you share it with your friends or juniors so that से माने भी सेमती benefited हुवंतु so from anyone to say anything just check me out
yeah, answers will be provided, don't panic for that one. जोटा तुमको लेखा हैला से आंसर टा तुमको पीडीएफ फॉर्मेट रे प्रोवाइड कर दिया जिवो, बट केमिति फाइबो मु तुमको ऑलरेडी डिस्कस कर देछि. Go to DP Chemistry Odia app, join the free batch, will be available all the PDFs whatever I have discussed here in order to download. Okay. If you have attended all the PYQ series, concept clear अच्छी, 60 plus is guaranteed. Because जो short question तमरा पढ़िबो ताकू नेकी कोनोसी कमेंट करी हबो नै, but conceptual question रे you can easily score 60 plus if you have gone through all the 10 years questions and concepts simply, so you can score easily 60 plus. Okay. तो आउ जो स्ट्रेटजी तुम रहा राति 8 बेलू तुमको डीपी सर आज शेयर करेंगे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज एट राइट 8 PM. You wait and watch for that one. Okay. So thank you all for your patience. We'll meet in the second video with 4 more long questions sure shot. जो थे मु तुमको आउ 4टा long question रे एमती elaboration and clarification देबी and will be provided notes in the PDF format. Okay. So thank you all for today. We'll meet in the next class soon. ओके सो सार तो आज तुमको पूरा पूरी फिजिक्स रो 3टा लॉन्ग क्वेश्चन करे दी आउ जो 4टा लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी ताको नेक्स्ट क्लास रे कवर करा हो जंते सार कहले. तो जो पिला माने भी धर मिस कर देथिबो सार प्रथम रो कहि देथिले आउ थरे मु कहि दउची ए जो एटा तो बुझा आइ गला राइट. तुमको पूरा रिटन पीडीएफ दे दिया होची, ठीक अछि. सब जिंस तुम हाथ पापुली रे थोई दिया होची, जस्ट तुमको सेटा को उठे की नबार अच्छी, कैच करिवार अच्छी एंड प्रस्तुति जारी रखिवार अच्छी. तो देखो तुमको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 7टा आमे कहिलु मोस्ट सिलेक्टेड रात्रे आसीबी स्ट्रेटजी नै कि जो माने किछि पाठ पढिनो किंबा अल्प स्वल्प पढिचो ओरिड अच्छो किंबा सब पढी सारिचो, तो टॉप मोस्ट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन केमितिका जे माने किछि पढिनो केमितिका 60 प्लस रखी पारिबो राइट. इवन आमे कहबा तुमको 70 प्लस बहुत इजिली स्कोर करी हो फिजिक्स रे. सब ट्रिक्स कहबी संध्या बेले रात्रि आसिले आज 8टा बेले मन रखियो लाइव आसीबी यूट्यूब रे. लॉन्ग क्वेश्चन पाइबा पे तो डीपी केमिस्ट्री ओडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो. तेथरे तुमानकर एटा अछि CHSE 2024 PCMB प्लस इंग्लिश सिलेक्शन. ए भितरे जो लॉन्ग क्वेश्चन लो पीडीएफ गुडा को मिली जिवो आंसर पीडीएफ 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन रो पीडीएफ मिली जिवो. तुमानको आंसर निजुको करिवार अछि बा तुमाने कोन करि परिबो समृद्धि बैच को जॉइन करि परिबो जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट. सेथे तुमानकर होल सिलेबस रिवाइज करा हैछि. तो सेथे तुमानकर से 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन भी सब कवर हे जिवो. तो ताको देखि परिबो नहले PCMB PYQ सीरीज को नै परिबो जो माने नै ना हो. ओके पिला माने आज रो वीडियो को एतिके रखिबा. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन